ओके, तो आज हम देखने वाले कि वीएस कोड से गिटहब में कोड को पुश कैसे करते हैं। इसके लिए पहले गिटहब ओपन करेंगे। ठीक है। उसको कोड स्पेस बनाएंगे जिसमें हम फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, जिस रिपोजिटरी में। तो अभी हम पाइथन में करना चाह रहे हैं, तो जस्ट सेलेक्ट ऑन पाइथन फाइल और द फाइल यू हैव क्रिएटेड। पाइथन, ओके। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कोड स्पेस। वेट अ मिनट फॉर आफ्टर दैट। ओके, so we are in VS Code. It took some times to create a space for code. Okay. So here is a list of file I have created. Now let me create new file. Okay. Let's say new file dot py. Py is the extension for the Python file. Okay, and just write the simple code. Okay, wait a minute. There is extension installing. Okay. Create just a normal print function. Hello world. Okay, and just run it. Uh, the extension is still installing. Wait a minute. Okay, extension has been installed, and just click on run button. Here is the result. Hello world. Then code को push कैसे करें? So just click on source code and just click on the plus button, and in the message box just write the message. आप क्या इस कोड में केस हो? नहीं तो आप जस्ट सिंपली स्पेस बार को क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके कमिट एंड पुश ऑप्शन चूज करके कर सकते हैं पुश कोड को। अब हम देखते हैं कि कोड या फिर फाइल गिटहब में अपलोड हुआ है कि नहीं, या फिर पुश हुआ है कि नहीं। तो जस्ट इसको इधर टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इधर पाइथन, there is a file, new file .py we have created here, and that file is pushed in this GitHub. Thank you for today. नमस्कार भैया, लाइक कर दीजिएगा।